2020। हीरो ऑफ द 2020 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आदेश कुमार गुप्त और आज सिडनी में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी और आज आ रहा है याद गालिब का वो शेर, सुनते थे शोर बहुत पहलू में दिल का, जो चीरा तो कतरा खून ना निकला। क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि न्यूजीलैंड की टीम आज ज़बरदस्त खेल दिखाएगी, लेकिन पाकिस्तान ने एक तरफा ये मुकाबला जीता और 7 विकेट से अपने नाम कर फाइनल में जगह बनाई। Well, what actually is the excitement in your voice? I loved it. And जैसा आपने सुना, आदेश ने आपको बता ही दिया है कि आज पाकिस्तान today absolutely ruled the ground and the game, and they made it very clear with their body language also that they owned every single bit of it. But right now in the studio, owning every single moment is I, Geetanjali Soni, with me Adesh Gupta, and our experts in the studio, Jaya Sharma, former Indian cricketer, and oh my gosh, what a play it was. We have senior sports journalist Rakesh Rao. Well, we have excitement as in that, India has really reached to the semi-final, which we yet have to speak, but I'll start with Jaya first. Oh Lord, Jaya, so we'll calm down a bit. How was the game? Yeah, I think that was a cracker of a game, and as we expected, being a semi-final, but it was swayed towards Pakistan, both in bowling and batting, and in fielding too. I mean, there was some brilliant fielding, which New Zealand couldn't do it, and I think Pakistan just outplayed the Kiwis here. राकेश, बाबर आजम और रिजवान क्या जान साबित हुए पाकिस्तान के लिए। देखिए, ये पहली बार तो नहीं हुआ था ऐसे, 10 बार इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड कप में 100 से ज़्यादा रनों की साझेदारी की है और ऐसी साझेदारी पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में किसी भी ओपनिंग बैट्समैन ने नहीं की है। और ये दोनों के फॉर्म को लेके बाकी इतने टाइम से हम सुन रहे हैं बातें, एशिया कप से ये जो कॉन्वर्जेशन था ये शुरू हुआ कि उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, और सही भी था क्योंकि उसके बाद आज उन्होंने ये दिन चुना जब एक 100 रन की साझेदारी और कमाल की बैटिंग, और मेरे ख्याल से ये सब शुरू हुआ वो पहले ओवर से, जब शाहिन शाह आफरीदी ने जिस अंदाज से पहला विकेट लिया। आई थिंक उसके बाद से अगर आप देखें, न्यूजीलैंड उठा ही नहीं पूरे गेम में। जी, एब्सोल्युटली। बट राइट नाउ, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारे स्टूडियो में हमें जगाने, उठाने, हमारा साथ देने हमारे कॉलर्स हमेशा तैयार रहते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं 23421084, 23421085, 011 हमारा कोड है, लगाना ना भूलें। और आप हमें प्रसार भारती स्पोर्ट्स पर देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा। सो अगेन, द ओनली कंसर्निंग फैक्टर, Rakesh, I had, because I was very much hopeful actually. We were talking about how calm New Zealand team is, how composed they are, the way they have really played during the World Cup. That's really amazing. I wanted to speak more about it, but I think it's about time we should get into the presentation ceremony, and then we'll talk further. Rizwan, congratulations. First half century of this World Cup. What was the key? Bismillahirrahmanirrahim. Luckily, the 50 was in the semi-final. I'm lucky. But if you look in the start of our batting lineup and our match of the tournament, me and Babar was struggling with the pitches, the swings, the conditions were different for us. But we still hard work towards the Allah demand from us, and we believe on this. Yeah, still we believe that inshallah, because every player will be going on this day, yeah, and everyone will be go with somewhere struggling, but they're gonna hard. They keep fighting. If we do that, alhamdulillah, give us 50 in that match. The best power play batting for Pakistan in this tournament. Was that deliberate to go so hard in the power play? Yeah. Obviously, when we crossed the boundary line and me and Babar was decided that we can attack on them, these guys, the new ball, because we know that the pitch was tricky, so difficult, and the 150 is a good target on that pitch. But we decided that we can do hard work, attack on them, on these guys. And when we finished the power play, one of the guys we go deep, because obviously pitch was tricky, and alhamdulillah, Allah help us and we success on that decider. What does this mean to you and the team, given where you were a few days ago to now be in the final of this ICC Men's T20 World Cup 2022? If you ask me really question, and if I give you honestly question, our start was not good, but the guys are keep harding and they believe, because as our belief is different, because we know that Allah is the creator, and what Allah demands from us
best. He just said, you do hard work and believe on me. I will make the things easy for you. And the guys are still same looking that. Alhamdulillah, and we won today and we go to final. Alhamdulillah. 57 from 43. Congratulations, Mohammed Rizwan, and all the very best in that final. Thank you, thank you, thank you. Mohammad Rizwan it was, and actually this is nothing less than miracle for a Pakistani team, the way they were written off this World Cup and how they have really made the comeback. I guess this is impossible thing, and the way their body language, personality, and the way they spoke, and it is very much evident. So I so much want to take this comment from Rakesh right now. This seems to be something out of the fairy tale. Well, this is something which is really, it is special. Let's just hold it like this, because Pakistan lost 2 matches, the matches that they should have won at the start. Now that pain of losing matches from a winning position, that hurts even more. Give a lot of credit to that team for believing that, look, first of all, we need to get our acts together. They were praying that India loses to South Africa. Right. That didn't happen. They were praying that other teams beat us. They were praying that they beat New Zealand, they beat South Africa. That did happen. Finally, their prayer was that, finally their last approach was that South Africa loses to one team, Holland. And of course, Holland did beat them. Now the point is, from the point that they were praying for other teams to perform in a certain way, they started making things happen. Today, a team that started with 2 losses is the first team to be in the final. I mean, it's an amazing thing to reach that far, and now they are looking the best team to win. I mean, I'm sure on the eve of this particular game, when they come back, into play, they will be the favorites. They'll be the sentimental favorites all over the world, because people wants, people who are underdogs and who have really fought well, and when you see something like this, even neutral, supporters who normally don't support team A or B, their hearts are going to be with Pakistan. Very much so, but now our callers' hearts are with us. So another caller, very first caller of this particular show is with us. जी जुड़ते हैं उनसे. हेलो. हेलो जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. अपना नाम बताइए. जी सर, नमस्कार. जी नमस्कार. ग्राम बनवावाड़ा, जिला शहडोल, मध्य प्रदेश से संजू साहू बोल रहा हूँ सर. जी साहू जी, बोलिए. सर, आज के मैच में तो बहुत अच्छा आनंद आया, लेकिन ये है कि भारत और पाकिस्तान का फाइनल होना चाहिए. जी, उम्मीद बरकरार रखिए. एक और लिसनर से जुड़ते हैं. जी, अभी लिसनर तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही हम कहना चाहते हैं कि लोगों की उम्मीद आदेश यही होगी कि कल के मैच में भारत भी यही जज्बा दिखाए और इसी तरीके से खेले. लेकिन आज के मैच की जो हम चर्चा कर रहे हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें जया सीखनी भी हैं, और आने वाली टीमों को और ये भी जानने की बात है कि ऐसा क्या एक खिलाड़ी के अंदर जज्बा जागता है जब इतने आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल के आते हैं. आज तो खाली पाकिस्तान की बात होगी, क्योंकि न्यूजीलैंड को तो देखते हुए वाकई अभी तक मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि इतनी मीडियोकर कैसे लगी न्यूजीलैंड. आज कैसे लगी? देखिए, आई थिंक जो टोन सेट करी पाकिस्तान ने पहले, दे डोमिनेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड गेम इन बॉलिंग, एंड उसके बाद जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई तो कोई भी बॉलर ऐसा नहीं लगा, और इनफैक्ट पाकिस्तानी बैट्समैन को बड़ा इजी हो रहा था उन पेस बॉलर्स को खेलना, ऑल्दो विकेट वाज ट्रिकी. बट आई गेस जो अभी रिजवान ने कहा कि दे केप्ट बिलीविंग दैट इट विल टर्न अराउंड. आई मीन एज अ प्लेयर आई कैन से दैट you struggle with form sometime, but as we all know, form is temporary, class is forever. Permanent, yes. So I think this duo, they have done so much for Pakistan, and they have performed well in different environments, different conditions. So I think Pakistan team is peaking at the right time. They got momentum, and now they are riding on that momentum, and I think they are peaking on the right time. जो स्पीक है वो तो हाई वॉल्यूम पे रहा राकेश, और आप देखिए कि जो स्कोर थे 57, 53, 32, 30, ये कोई टेलीफोन नंबर नहीं है, बल्कि उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के रन हैं. तो आपको लगता है कि जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप है, टॉप ऑर्डर, उन्होंने आज अप्रिशिएट किया अपने बॉलर्स को? देखिए, दो चीज़ें हुई हैं. पहले तो पाकिस्तानी गेंदबाजों ने जैसे गेम को बिल्कुल सेट कर दिया. 152 रन कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं है,
और ऐसा भी होता है कि जो स्टिकी विकेट होता है, जितना गेम उस पर ज़्यादा लंबा खेला जाता है वो थोड़ा और जो है बैट्समैन के फेवर में आता है। विकेट ख़राब नहीं हुई, थोड़ी इंप्रूव हो गई, लेकिन उसका फ़ायदा जो है जिस अंदाज से पाकिस्तानी बैट्समैन ने उठाया है, क्रेडिट दीजिए उनको कि उन्होंने जो पहले 6 ओवर में जो ताबड़तोड़ बैटिंग की है, 55 रन्स फॉर नो लॉस, आई मीन फैंटास्टिक स्टार्ट। वहाँ से अगर आप देखें कितने चौके मारे हैं उन्होंने पहले 6 ओवर में, उससे जो था लाइक बाउंड्री बॉल्स अगर आप देखें दोनों या जितनों के दोनों टीमों ने जैसे चौके मारे हैं, उन्होंने पूरे इनिंग में 10 मारे हैं न्यूजीलैंड ने, इन्होंने 14 मारे हैं। न्यूजीलैंड ने 2 छक्के मारे, इन्होंने 1 छक्का मारा, लेकिन जो बाउंड्री बॉल्स थी वो भी जो डिफरेंस है वो आपको पहले 6 ओवर में ज़्यादा दिखा, उसके बाद तो सेटल हो गया, क्योंकि पूरा जो मैच जो चला है 5 ओवर ऐसे खेले हैं पाकिस्तान ने जिसमें कि 10 से ज़्यादा रन आए हैं। जी बिल्कुल, और जो कि न्यूजीलैंड के साथ नहीं हुआ। न्यूजीलैंड के साथ काफ़ी चीज़ें नहीं हुई, इवन फील्डिंग पे मैं चर्चा करना चाहूँगी, लेकिन एक कॉलर है वो भी कुछ कहना चाहते हैं। हेलो, हाय, गुड इवनिंग टू द पैनल। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। अपना नाम बताइए। NR Prasad from Rajajinagar, Bangalore. Yes, tell me, how did you find the match today? Match was thrilling today. Yeah? But I'm concentrating for tomorrow's match. Yes, we all are. I heard that Rohit Sharma may not be playing. My suggestion would be bringing in Deepak Hooda. It strengthen the batting and bowling option also available. So, what is the panel's view on this? Well, in fact, we did not have this kind of information, but if you're saying so, probably our panel will have a better idea, our experts, that we shall let you know about. But रोहित शर्मा के बारे में वैसे खबर तो ये है कि जो उनके कलाई के पास चोट लगी थी वो पूरी तरह से ठीक है, और टीम इंडिया की ओर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है कहीं ऐसा नहीं है। खैर, इस पर तो चर्चा होगी बाद में, लेकिन जिया जी, क्रिकेट तो चमत्कारों का खेल कहा जाता है, लेकिन न्यूजीलैंड को आखिरकार सेमीफाइनल में क्या हो जाता है, क्योंकि 4 सेमीफाइनल और 1 फाइनल ये हार चुकी है 2020 वर्ल्ड कप में। जी देखिए, बिग गेम प्रेशर है, बट ऐसा कहना नहीं चाहिए। प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा है आजकल, ऑल अराउंड द वर्ल्ड इतना क्रिकेट खेलते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि, और अच्छे मोमेंटम पे था न्यूजीलैंड, ऐसा भी नहीं है कि बहुत टूर्नामेंट में बहुत ख़राब खेलता आया है, लेकिन आई थिंक जो एक प्रेशर होगा वो नॉकआउट स्टेज का प्रेशर होगा। मगर फिर भी मतलब एज अ प्लेयर वी कांट एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले और हर चीज़ सही बैठे, तो आई थिंक आज लिटरली पाकिस्तान ने जो है वो न्यूजीलैंड को आउट प्ले किया। And Rakesh, as she was saying, Jay was saying that Pakistan picked up at the right time, and their momentum at this point, I think that is going to be forced to reckon with. So when they are in final now. Yeah. अब अगर हम इंडिया की बात करें, हर कोई चाहता है इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना, तो हालांकि मुझे लगता है ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होने वाला है, इसमें थोड़ा सा बैकलैश भी आ सकता है, लेकिन आपको इंडिया किस पायदान पर खड़ी दिख रही है इस वक्त? देखिए, जैसे इंडिया खेला है और जैसे इंग्लैंड खेला है, अभी मैं ये देखूं कि एडिलेड की पिच पे जैसे मैच हो सकता है, मेरे ख्याल से इंग्लैंड फेवरेट है उस मैच के लिए। मैं उसको 60-40 मान के चलता हूँ। इंडिया को अपने इस लेवल से जितना अब तक खेली है उससे बेटर खेलना पड़ेगा इंग्लैंड को हराने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के पास आपको 11 प्लेयर ऐसे लगते हैं जो तैयार हैं T20 वर्ल्ड कप एज ए टीम खेलने के। हमारी टीम में वो 11 लोग दिख नहीं रहे मुझे। तो फेवरेट तो इंग्लैंड ही रहेगा, लेकिन हाँ, जैसे हमने आज देखा, आज ये मैच लग रहा था बिल्कुल इवन होगा, लेकिन जैसा हुआ वन साइडेड हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब गेम शुरू होने के बाद जो हम जो अटकलें लगा के बैठे होते हैं, हो सकता है उसके बिल्कुल विपरीत हो जाए। लेकिन हाँ, जैसे आपने पूछा कि क्या हो सकता है, मैं इंडिया को फेवरेट नहीं मान रहा हूँ। चाहता तो ज़रूर हूँ कि इंडिया जीते, क्योंकि देखिए मेरा दिल तो इंडिया के साथ रहेगा, लेकिन क्रिकेटिंग रीजंस अगर मैं देखूँ अभी तक के वर्ल्ड कप के हिसाब से, तो इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जय जी, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट, मालान और मार्क वुड, उनके बारे में ज़्यादातर राय अभी ये है, उनकी फिटनेस को लेकर बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं। अगर वो नहीं खेलते तो आपको लगता है भारत की राह आसान हो सकती है? देखिए, राह तो ऐसा नहीं है, जो बेंच पे भी बैठा है, बेंच स्ट्रेंथ जो है वो भी बिल्कुल उस लेवल की होती है कि आप कभी भी किसी भी सिचुएशन को देख के उसको चेंज कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि नो डाउट थोड़े कंसर्न्स हो सकते हैं, बट आई थिंक इंग्लैंड विल गो ऑल आउट इन दैट मैच। जी बिल्कुल, और जैसा हम कंसर्न्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक उस कंसर्न्स के बारे में और भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में क्या हो रहा है वो जानते हैं। And we managed to sort of wrestle back a little bit of momentum, an unbelievable knock from Daryl Mitchell, and at the halfway stage we were all feeling like that was a competitive total. We knew the wicket was a little bit tough, a used surface, and
Yeah, I mean, very disappointing to not make Pakistan work a lot harder for that. They were outstanding. We were outplayed today, and credit goes to their quality. Certainly deserved their win. A tough pill for us to swallow. We certainly pride ourselves in a number of areas, strengths of ours, and didn't quite do that today. One of those areas, all tournament, you've been top of the table in terms of your fielding and your catching. You had some issues today. Yeah, fielding was okay. Yeah, look, Babar and Rizwan at the top of the order put us under pressure and played really nicely. I think if we're honest with ourselves, we wanted to be a little bit more disciplined with our areas and make that a little bit more difficult to get away on. And, if we're able to just keep it nice and straight. Having said that, there's always different parts of the game you want to touch on to do a little bit better. But at the end of the day, Pakistan certainly deserve to be the winners. As you reflect on this tournament and the way that it has gone for New Zealand, what are a couple of positive things that have come out of it for you? Yeah, there's been a lot of good cricket. For us throughout the round robin stages, we've played pretty nicely. We've stuck to what's given us a real good chance to go through this tournament. And today we weren't quite at our best, so that is frustrating. But having said that, we know the fickle nature of T20 cricket, and we didn't quite get across the line today. All right, Kane, thank you very much for your time. Cheers. Well, clearly, thank you very much for your time. We could say the New Zealand team, but what else do we have? ICC Men's T20 World Cup 2022, how do you feel? To be honest, Alhamdulillah, the way team performed very well last 3 matches and then today match, and especially I thanks my whole crowd. We are feeling like we are playing at home, and everyone is coming and cheer up in Pakistan team. Your bowling effort today with Shaheen Shah Afridi spearheading that. Give me your thoughts on how you guys went in the field and with the ball. To be honest, yes, we had a good start with the first 6 over, but because later on not ball coming proper, so we have decided to watch first 6 over we are utilized, and then later on we have a good spinner like Shadab and Nawaz. They are bowling very well, and in the end we have a fast bowler finished very well, so we are stuck in 150. I spoke to Rizwan a little while ago, and he talked about the planning between yourself and him, 900s in that partnership in T20 internationals. How deliberate was it to go hard in the power play? Yes, we have a plan before we are going inside, and we are decided to utilize first 6 over because that momentum carry in the batting. Then we have utilized the first 6 over, and good for us. We are utilizing first 6 over, and then later on everyone come and chip in our effort. Mohamed Harris, young guy into this World Cup. Your rating? I think he's a young guy, and he's showing his aggression, and he's tell the world they have more aggression. So as a batsman, I'm looking very look to bat on, and he's playing very well. You don't know your opponents in this final yet. How do you celebrate this victory, knowing where you were 4 days ago, and keep focused on that final? Yeah, we have a win this win and enjoy this moment, but at the same time we have a focus of the final. But as we know, we are not sure which team are coming, so we have enjoy tomorrow. But we have a couple of days we are sitting together and discuss our more improvement, and more we have a more discussion on batting and bowling. Congratulations on reaching the final of this men's T20 World Cup 2022, and all the very best. Very well played to you and your team, Babar. Thank you. Babar Azam has lot many reasons to smile. One, his form is back, and he seemed to be pretty happy with the performance, Rakesh. Yeah, obviously. See, because what he was actually stressing was the way they planned their chase. They wanted to go hard in the first 6 overs, and as a result, they sent the ball across the ropes 9 times. That was one less than what the New Zealanders managed in 20 overs. So that onslaught up front, that sort of an attack, you're getting 55 runs, out of which 9 have been hits to the fence. That means 36 runs have come only on boundaries. Now that unsettles any attack, be it a
pace bowler or a spinner, because their fast bowlers went for 15 and 15 runs. Two of their fast bowlers went for 15 runs each in the first 6 overs. Now that turned it. That really hit them on the face, and thereafter they couldn't recover. और जय जी आपसे ज़रूर एक संक्षिप्त टिप्पणी लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे लिसनर हैं, जुड़ते हैं उनसे। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताइए। जी, स्वागत के लिए पहले आदेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गीति बात कर रही हूँ बलरामपुर से। जी, गीतांजलि जी आपसे बात करेंगे। जी बिल्कुल। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, क्या हाल है आपके? हम तो बहुत अच्छे, क्योंकि आपकी आवाज सुनने तो और भी अच्छी होगी। और दोनों एक्सपर्ट को भी मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, आप इतनी प्यारा बोल रही हैं तो मैं आपको एक छोटा सा शेयर जल्दी से बोल देती हूँ कि आपके आने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे हमारा शो सचता है। समझते वो हाले मरीज अच्छे। नहीं, बट हम मरीज नहीं है, इसलिए मैंने आगे बोला नहीं। जी कहिए, आज के मैच के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैम, भी ये कहना, जैसे पाकिस्तान जीत गया, जब हमने वनडे में देखा था पहली बार, तब भारत हार गया था और पाकिस्तान भी नहीं। आज जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड खेला था, आज क्या हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा? अगर होगा तो जबरदस्त परफॉर्मेंस होंगी, देखने को मिलेगा, और एक हम लोगों के अंदर जो फीलिंग होगी अच्छी होगी। तो क्या सर से जानना चाहते हैं? जी ज़रूर, बहुत अच्छी फीलिंग होगी। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड नहीं, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान खेला था, सो ये थोड़ा सा इमोशनल, जब खुशी होती है ना तो थोड़ा आउटबर्स्ट भी हो जाता है। सो क्विक कमेंट फ्रॉम राकेश, एंड इट्स अबाउट टाइम फॉर अस टू लीव नाउ। Yeah, I think India versus England should be a close match. And Indians will have some work to do, but I do expect an India-Pakistan clash. But for that to happen, as I said, I'll just repeat myself, England is a good side. Let's not underestimate them. इतना भी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए भारत से कि बिल्कुल ही नहीं, नाउम्मीद नहीं हो रहा हूँ मैं, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि प्रोस्पेक्ट्स मेरी नज़र में कौन सी टीम फेवरेट है, बस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं जीत सकते। I think as a player, I will not go into expert role. I will go into a player's role, and I wish India to win and goes to the final. And I think it will be huge for the revenues also for ICC if India-Pakistan clash happens. So Jaya, we loved you always as a player's role and as an expert in our studio. We love having you. Thank you so much for being in the studio. Thank you, Rakesh. Your words are always like golden words for us. Thank you, my dear friend Adesh. This is Gitanjali Soni, and do wait for the cracking second semi-final and the final, and we all shall be here in the studio. Love to our listeners and the experts team and all the technical staff out here. Enjoy the game. Keep enjoying. हीरो ऑफ द 2020। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे प्रवीण चंद और वीके तोमर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।